Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. Today we are going to start the discussion of physiology of pregnancy. But before that, as per my routine, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ये प्रेगनेंसी के मुतल्लिक कुरान पाक का आयत है कि मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती है, अल्लाह यालमु, अल्लाह जानता है, मा तहमिलु कुल्लु उनसा, जो हामला औरत अपने पेट में उठाए हुए है, अल्लाह उसे बखूबी जानता है। वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दाद, और अल्लाह का पेट का घटना बढ़ना भी, ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये अल्लाह भी खूब जानता है, अल्लाह पैदा कर रहा है। और वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, अल्लाह के पास हर चीज़ उसके पास एक मुकर्रर शुदा अंदाजे के मुताबिक है। क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी, कितने महीने में कौन सी स्टेज होगी, कब इसके न्यूट्रिशन कैसे होगी, समथिंग वी नो, हम डिस्क्राइब करेंगे, बट मैनी थिंग्स अल्लाह नोस। तो वो अल्लाह जानते हैं, हर एक चीज़ को मुकर्रर किया हुआ है, ड्यूरेशन मुकर्रर की हुई है कि हर एक चीज़ की कैसे डेवलप होगा। तो ये सूरह रात की आयत है कि मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती है अल्लाह इसे बखूबी जानता है, और पेट का घटना बढ़ना भी खूब जानता है, और हर चीज़ उसके पास अंदाजे के मुताबिक है, मुकर्रर शुदा तरीके के मुताबिक है। तो यही हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी में। So when if fertilization occurs, fertilization will occur in the ovum, will be in the fallopian tube. If fertilization of the ovum occurs, a new phase of the female reproductive life starts, which is known as pregnancy or gestation. There are marked physiological changes in whole of the systems of the pregnant lady. उसके cardiovascular system भी, और hormonal system भी, और vascular system भी, और body fluids भी. There are drastic changes in all those systems. But there are special changes in the reproductive system which we are more concerned, and उसको हम detail में we are going to discuss. So ovum, maturation of ovum, first we are going to talk about. The maturation of ovum, we know that the primordial follicle, number of primordial follicle is fixed. We have already discussed in the previous lectures. That is, primordial follicle contain the primordial ova, and they are still in the primary oocyte stage, वो arrested first meiotic division में, prophase of the first meiotic division में उसको कहते हैं. Just before the ovulation, ये जो development of the one follicle takes place, जो follicular phase हमने discuss किया है, when this follicle is maturing, first meiotic division is completed just before the ovulation. And that is not division of the cell, equal division of the cell. It is the only loss of the nuclear material. 23 chromosomes are lost in the form of the first polar body is shed, and the secondary oocyte is formed with the 23 chromosomes. ये पहली डिवीजन कंप्लीट होगी, ये जो एक सेल बनेगा, दूसरा सेल तो पोलर बॉडी के तौर पर, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेल, वो डिजनरेट हो जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी. एंड दिस ओवम, दिस इज द 23 पेयर्स वाला, दिस इज द सेकेंडरी oocytes. This will be secondary oocytes. So the second meiotic division in this secondary oocyte will complete if sperm enters into it. Only at the entry of the sperm तब इसकी complete होती है second division. So second polar body will be shed, mature ovum will be formed, and it will start it will multiplying, और ये जब sperm भी आ जाएगा. So 22 autosome and 1 X chromosome is present in this mature ovum, and the sex of the offspring is determined not by the ovum, it is determined by the fertilizing sperm. If the female contains XS chromosome, if the fertilizing sperm is X, then that fertilization will result into the formation of the female baby. And if the fertilizing sperm contains Y chromosomes, वो मेल वाला क्रोमोसोम वाला है, वो हाफ पॉपुलेशन X वाले हैं, हाफ पॉपुलेशन Y वाले हैं. ये अल्लाह की मर्जी है, या सिंपल आप चांस है कि कौन सा इसको फर्टिलाइज करता है. तो सेक्स विल बी डिटरमिन्ड बाय दी sperms.
Oogenesis, we have talked about that. That oogenesis, the mitosis starts, and this the DNA replication हो गई है, and arrest meiotic division, and first polar body will be shed, और वो divide करे ना करे, first polar body is shed, or second polar body is shed after the sperm enters, second polar body is shed, and the fertilized ovum will result. Oogenesis ऐसी होती है. So this fertilization will take place in the fimbriated and ampulla of the fallopian tube. Ampulla of the fallopian tube. Ovulation occurs here. It is taken up by the fimbriated end of the fallopian tube, and then fertilization will occur here. Now entry of the fallopian tube after ovulation. Ovulation के बाद ovum ने enter करना है, अभी sperm ने बाहर नहीं आना, ovum ने enter करना है into the fallopian tube. तो ovulation into the peritoneal cavity, hundreds of the coronal radiata cells are covering this ovum, and around this ovum there are several cells, hundreds of the coronal radiata cells. This is taken up by the fimbriated end of the fallopian tube, which is near the ovaries. And fimbria, those tentacles are lined by the ciliated epithelium. The fimbriated end में जो fimbria हैं, उसके अंदरूनी साइड पे lining is the ciliated epithelium, which are beating toward the abdominal ostium, opening of the fallopian tube into the abdomen. Abdominal ostium in here, and they are beating it, they are setting a current of fluid, and that will take the ovum into this into the cilia, beat toward the abdominal ostium of the fallopian tube. A current of fluid is set by the cilia, and 98% of the these ovulated ovum, they do enter into fallopian tube. हालांकि जंगल में फेंका जाता है, vast area of the peritoneal cavity, लेकिन अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा है कि this causes the entry of the fluid of the, so much so that is the ovum can enter into the opposite fallopian tube. एक साइड पे ovulation होती है, मैं वापस जाता हूँ, ये diagram, if ovulation is taking place on this side, say, and this ovum tube is blocked, or this has been removed, ऐसे भी होता है, ऑपरेशन कर दिया या ये ब्लॉक हो गया है, ओवुलेशन इधर हुई है, and this can fluid की करंट ऐसी होती है, this can travel all the way on the opposite side. ये किस लिए कह रहे हैं कि there is a case on record एक खातून में जिसमें ओवरी एक साइड पे थी और उसकी ट्यूब इधर नहीं थी, और इधर वाली ओवरी निकाल दी गई थी ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटी, उसकी एक साइड की ओवरी निकाल दी, दूसरी साइड की फ्लोपियन ट्यूब निकाल दी. ओवरी इज ऑन लेफ्ट साइड और दिस इज ऑन द राइट साइड, लेकिन उसमें भी 4 प्रेगनेंसीज हुई हैं. अल्लाह ने ऐसा निजाम भी किया हुआ कि ओवुलेशन इस साइड पे हुई है एंड इट हैज एंटर इनटू दिस एंड प्रेगनेंसी इज पॉसिबल. सो दिस इज, इसको हम आगे जाते हैं, दैट ये जो मैंने लिखा हुआ है, ovum can enter into fallopian tube on the opposite side. वो तो एबनॉर्मल कभी कभार होता है, नॉर्मली हर 98% इसलिए लिखा हुआ कि 98% ओवा दे डू एंटर इनटू द fallopian tube. उसके पास ही fallopian tube पड़ी है, दोनों ओवरी के पास fallopian tube पड़ी हुई है. So sperm may reach the ampulla. अब ampulla में दाखिल हो गया, sperm may reach the ampulla within 5 to 10 minutes after ejaculation, and the transport of sperm is aided by the contraction of the uterus and fallopian tube. स्पर्म खुद भी फ्लैजिलेटेड मूवमेंट थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो हमने देखी हुई है 4 मिलीमीटर मैक्सिमम, 4 मिलीमीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, वो इतना स्लो है. लेकिन ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इज एडेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड कंट्रैक्शन ऑफ द fallopian tube. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हमने पहले भी बोला था किसी लेक्चर में, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस occurs in the fallopian tube and it helps the propagation of ovum toward the ampulla of the fallopian tube. And ये किस वजह से हो रहा है? Prostaglandins in the semen. We had talked about the functions of prostaglandins in the semen, and one function is this, that the reverse peristalsis and contraction. And then oxytocin is also released during female sexual act, and that causes the female orgasm के दौरान there is production of oxytocin, and that oxytocin causes the contraction of the uterus. उसका काम ही contraction of uterus है, and that may suction on the semen and help the propagation of the sperm into the fallopian tube. And the 500 billion sperms are ejaculated. हमने कैलकुलेट किया था ना, about 200 ml, 200 million per ml. तो 500 billion sperms are ejaculated, और उसमें से within 5 to 10 minutes 1000 to 2000 or 3000 sperm may reach the ampulla. अब उसमें एक चाहिए. All these sperms are required for that what we termed as the acrosomal reaction.
ये हेल्प कर रहे हैं सारे स्पर्म फॉर द डाइजेशन ऑफ द ऑल द पाथवे टुवर्ड द एम्पुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब. Or this acrosomal reaction helps the dispersal of the corona radiata cells, and then one sperm reaches there and it causes the fertilization, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है. So sperm binds with an and then penetrates the zona pellucida, and then the only head containing the chromosome they enter. ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. Omicromic chromosomes are transferred into the ovum. So head swells up and form the male pronucleus. Immediately ये दाखिल होता है और इसी वक्त भी second polar body shed करता है the ovum, and उसका जो बाकी nucleus रह गया that becomes a female pronucleus, and the mitosis will start. ये स्टार्ट हो जाएगा. ऑल द 23 क्रोमोसोम दे विल लाइन एज पेयर्स, वो पेयर बना लेंगे, दे विल रेप्लिकेट एंड द डिवीजन विल स्टार्ट. नॉर्मल सेल डिवीजन, माइटोसिस विल स्टार्ट. सो ओवम शेड्स द सेकंड पोलर बॉडी हियर, फीमेल प्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एंड द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दे अलाइन टू कंप्लीट द 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम. और अब ये सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. ये डायग्राम में देखें, दिस इज द कोरोना रेडिएटा, ये ओवम है और अब हम इसको पहुंच गए हैं. एंड दिस the polar body shed करने के बाद head of the sperm has entered into that, and then this male and female pronuclei have been formed, and the centrosome are there और उनके वो बन गए हैं. those filaments are formed, and these chromosomes have lined up the pairs of chromosome, they replicate and the cell division starts. So mitosis will start immediately. Fertilization हो चुकी है, though mitosis will immediately start. It will divide into 2 cells and 4 cells, and marula cells or multiple cells will be formed. So now this fertilized ovum. Now this is fertilized ovum. आप इसको कहें new offspring, human being बनेगा इससे. So this will be transported from the ampulla of the fallopian tube to the uterus. So this is the feeble current of the fluid again in the secretion of the fallopian tube by the ciliated epithelium in the fallopian tube. उसमें भी ciliated epithelium है, and beating of these cilia is toward the uterus, toward the uterine ostium of the fallopian tube. उस तरफ ये जा रहा है, and it is causing the weak contraction of the fallopian tube also occurs. पहले इधर propagate, अब weak contraction इसको help कर रही है on that direction to help the transport of ovum towards the. लेकिन last part of the fallopian tube, which is termed as the isthmus of the fallopian tube, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन में, that remains contracted for 2 to 3 days after ovulation. ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम बना है, वहां प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रही है, वो प्रोजेस्टेरॉन विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ दिस. इसके लिए 2-3 दिन लगेंगे. इसका मतलब है इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस फर्टिलाइज्ड ओवम, multiple cells of the fertilized ovum in the marula stage, it will remain in fallopian tube for 2 to 3 days because the isthmus of the fallopian tube is contracted. Isthmus of the fallopian tube remains contracted for 3 to 4 days after ovulation, and this isthmus relaxes due to the progesterone from the corpus luteum. ये रिलैक्स कब करेगा? जब कार्पस ल्यूटियम से isthmus relaxes due to the progesterone, वहां का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है. दैट प्रोजेस्टेरॉन विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ दिस. और ये इसका यहाँ वेट जो कर रहा है ये 3 to 4 days, अल्लाह ने ये क्यों बनाया हुआ है? Because the endometrium is being prepared under the effect of progesterone. अब प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से यूट्रस को तैयार कर रही है फॉर इम्प्लांटेशन. तो उसको ये 3-4 दिन इसको इधर रखते हैं अल्लाह पाक. तो आफ्टर दीज 3 to 4 days प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना हो गया है कि दैट isthmus relaxes and this enters into fertilized ovum, then enters into the uterus. यूट्रस में एंटर करने के बाद भी it remains unimplanted for 2 to 3 days or 4 days. सेवरल सेल डिवीजन अगर ड्यूरिंग दिस, ये जो ट्रेवल करके आ रहा है फ्लोपियन ट्यूब में, ये मरूला बन चुका है. सेवरल सेल डिवीजन हैव टेकन प्लेस और डिवाइडिंग ओवम इज इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. अब यूट्रस में आके मल्टीपल डिवीजन, उसमें कैविटी भी बननी शुरू हो गई है और ब्लास्टोसिस्ट की शेप बन गई है इन फर्दर 2 to 3 days में. एंड सिक्रीशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब ग्लैंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. फ्लोपियन ट्यूब में इसको न्यूट्रिशन कहां से आ रही है? सिक्रीशन ऑफ दी फ्लोपियन ट्यूब. उसको भी फ्लोपियन ट्यूब का मिल्क कह लें या यूट्राइन मिल्क कह लें. सिक्रीशन ऑफ दो फ्लोपियन ट्यूब ग्लैंड इज द न्यूट्रिएंट फॉर दिस व्हाइल इट इज इन द फ्लोपियन ट्यूब. और यूट्रस में आके इट रिमेन्स अनइम्प्लांटेड फॉर सम डेज, एंड दो डेज यूट्राइन मिल्क दैट इज द सिक्रीशन ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज द न्यूट्रिशन फॉर दिस embryo or this fertilized ovum. So this has traveled. This is the diagram. It is traveling. Ovum has
and this is traveling, multiplying, multiple cells, and blastocyst शायद बन चुका है, and now it is entering into the uterine cavity, or it remains there for a few days, then it implants, फिर implant करेगा into the uterine cavity. ये implant का, ये uterine cavity है, ये blastocyst is implanting. So implantation, it remained unimplanted for 2-3 days. वो 3-4 दिन उधर, 2-3 दिन इधर, ये 7-8 दिन बन गए. तो 8वें दिन या 9th day of the fertilization ये implant होगा. So remained unimplanted for 2-3 days in the uterine cavity, and nutrition from the secretion of the endometrial glands, जिसको uterine milk कहते हैं, and implantation occurs जब वो touch करेगा. So on the surface of this blastocyst, it is covered by the cells which are now known as trophoblasts. These trophoblasts, they produce the proteolytic enzyme, digestive enzyme, which cause the digestion of the thickened endometrium. So implantation occurs by the trophoblastic digestion of the thickened endometrium. ये trophoblast proteolytic enzyme या digestive enzyme पैदा करते हैं उस implantation site पे, और उसको digest करके eat भी करते हैं. Nutrition is provided for this dividing embryo or blastocyst, उसको देते हैं, and the trophoblast secrete proteolytic enzyme for this digestion of the thickened endometrium. After implantation, ट्रोफोब्लास्ट एक्सेसिवली प्रोलिफरेट. अब जहां पे इम्प्लांट हुए हैं ये ट्रोफोब्लास्ट एक्सेसिवली प्रोलिफरेट, इसी से प्लेसेंटा बनेगा. These trophoblasts will form the cords which will be penetrating into the deeper layers of the endometrium, और ये placenta बना रहा होगा. So after implantation, trophoblasts excessively proliferate and finally they form the placenta. This is ovum is being embedded. This is ovum, this is thickened endometrium, और ये implantation हो रही है. These are the trophoblasts which are causing the digestion, embedding भी कर रही है into the penetration भी कर रही है, और ये finally they will lead to the formation of placenta. Now early intrauterine nutrition, ये हमने शुरू में बात की है. Persistence of corpus luteum and continued secretion of progesterone causes excessive deposition of the nutrients in the swelling of the endometrial cells, stromal cells, जिनको अब हम कहेंगे deciduous cells. So these are known as deciduous cells. जो endometrium की lining, वहाँ पे हमने सिर्फ उनको cells कहा था, stromal cell, which are loaded with the nutrition. अब nutrition और continue करेगा. Now corpus luteum will persist. इसका थोड़ी सी बात की थी. At the implantation site, there is production of the human chorionic gonadotropin, and corpus luteum will not involute after 12 days. अब 9th day पे ये production शुरू हो गई है, and that will act on the corpus luteum. Human chorionic gonadotropin will continue to stimulate the development of the corpus luteum. It will persist for months, a few months, and that will continue to produce the estrogen and progesterone, and trophoblastic this endometrial thickening will continue, and decidual reaction जिसको कहते हैं, decidual cells will continue to develop, and trophoblasts they digest and imbibe these nutrition in the decidual cells. इन्हीं को digest करके अर्ली न्यूट्रिशन यहाँ से है. अभी तो प्लेसेंट मदर से, तो मदर के ब्लड से तो अभी आना तब बनेगा जब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन प्रॉपर डेवलप करेगी, डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन. अभी तो वो नहीं बना. अभी ओनली दी थिकन एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं, डिसिडुअल सेल्स, दे आर लोडेड विद द न्यूट्रिशंस, एंड दोज न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग digested or imbibed by the trophoblastic cells. So early nutrition, this is the only way of nutrition in the first week after implantation. कहाँ से आएगी? ये ट्रोफोब्लास्टिक डाइजेशन पहले वीक में तो यही है. एंड देन द प्लेसेंटा स्टार्ट्स सप्लाइंग न्यूट्रिशन ऑन 16th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब ये 2 वीक से ज्यादा हो गए. अब इम्प्लांटेशन के बाद भी 7-8 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी डिफ्यूजन फ्रॉम दी मैटरनल ब्लड, कुछ न्यूट्रिशन आ जाएगी, कोई ग्लूकोज आ जाएगी, या कुछ अमाइनो एसिड आ जाएंगे. तो प्लेसेंटल स्टार्ट सप्लाइंग न्यूट्रिशन ऑन अबाउट 16th day, एंड ट्रोफोब्लास्टिक न्यूट्रिशन कंटिन्यूज फॉर 8 weeks, 2 महीने तक. प्लेसेंटा भी शुरू हो गया है ऑन 16th day, या उसके बाद वो कंटिन्यू टू इंक्रीज, उनकी डिफ्यूजन ज्यादा होती जाती है. सो ट्रोफोब्लास्टिक न्यूट्रिशन विल कंटिन्यू फॉर 2 months, 2 महीने तक ये जारी रहेगी, एंड प्लेसेंटा से भी आ रही होगी. ये दिस डायग्राम इज शोइंग अस दैट इज द अर्ली पार्ट में ट्रोफोब्लास्टिक न्यूट्रिशन है, प्लेसेंटा ग्रेजुअली इसको टेक कर रहा है, बट आफ्टर 8 weeks
this trophoblastic nutrition is gradually decreasing, and the placental nutrition, that is diffusion from the mother or some active transport किसी जगह होती है, placental nutrition diffusion will start after this 8 weeks के बाद भी, वो 16 दिन पे शुरू हो गई थी, but gradually it is increasing, और उसके बाद 12 weeks के बाद whole of the nutrition depends upon the diffusion from the placenta. Placental permeability is increasing. Permeability को हमने ग्राफ किया हुआ है. So toward the 36 or 30 weeks of pregnancy, this placental permeability continues to increase, and this provides the nutrition of the fetus. So that's all about the. We will continue this physiology of pregnancy, and we will talk about the function of this. No placenta has been formed. There are multiple functions of placenta. Placenta के कुछ function, hormonal function, for example. We will discuss the functions of placenta in next time, inshallah ta'ala. Thank you very much. Hope you are following me. अगर some questions, some queries, you can ask me in comment sections, and please do share और subscribe भी करें. सबका जारिया हमारा रहे. Thank you very much.